Hello students. Today I am explaining chapter 2 Principles of Management, which is developed by Henry Fayol. First principle is division of work. Students, according to this principle, the whole task must be divided into small tasks or units, and instead of assigning the whole work to the pupil, to the subordinate, to one person, one task or one unit of work should be assigned. Students, Henry Fayol saying that instead of whole task, only a piece of whole task, a small jobs of whole task will be assigned to the person according to his capability, qualification and experience of the employees. Because if a person is performing a आपका unit of job again and again, यानी कि same type of part, same type of job performing again and again, तो he will become perfect and specialized in doing that task, and the efficiency level will improve of the person. So division of work is must in the every organization. Henry Fayol said that not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided into small segment, into small piece of work for specialization. For example, in a bank, one person is receiving cash, another is giving cash, one is making entry in the passbook, one is giving loan, one is doing FD work, etc. So work is divided and bank operates efficiently. It's clear, students? Now discuss the positive effect of the principles of division of work. First is specialization. When work is divided according to qualification, then automatically it leads to specialization, because a person performing same type of task again and again, so he become a perfect and specialized in that job. Second is improves efficiency. When employee is performing only one part of job, then he becomes expert in that task. The result in less wastage of resources. Students, when an employee is performing only one task, यानी कि same type of work, so no chance of waste of resources, waste of anything. So the efficiency of the employees will improve. Now consequences यानी कि demerits of violation of these principles. If any pupil, any worker, any management, any organization is not following division of work principle, then what the problem faced by them? First consequences of violation is lack of efficiency. If division of work is not followed, then no efficiency will be improved in the organization. Second is there will be no specialization. If the division of work is not following and the small units is not assigned to the pupil according to their qualification and experience, then no specialization will be getting. Third is chances of duplication of work. Yes, if the work is not divided and assigned to a particular work, so there is a chance the work should be duplication in another place also. That's clear. Now second principle is authority and responsibility.
This is the second principles of Henry Fule. Authority means power to take decisions. Decision लेने की powers, that is known as authority. And responsibility means obligation to complete the job assigned on time. यानी कि which job is assigned to a particular person, it should be completion on time. This is responsibility. According to this principle, Henry Fule says that there must be balance or parity between the आपका authority and responsibility. स्टूडेंट्स, हैंडी फ्यूल ये कहता है कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बिटवीन एक बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, मे ब्रिंग आपका कह लीजिएगा नेगेटिव प्रॉब्लम्स, रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट्स. एंड एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी will not allow the worker to complete his job on time. In both conditions, students की excess of authority, if the authority is more without matching the responsibility, so the pupil and manager not performing his tasks in proper way, result is negative consequences and negative आपका result. On the other hand, if excess of responsibility matching without authority, यदि responsibilities more है उसकी authority से, then he will not able to complete his job on time. उस कंडीशन में भी pupil जो है अपने टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करने में कैपेबल नहीं होगा, बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मोर है, अथॉरिटी कम है, यानी कि पावर कम है, वर्क ज़्यादा है. देन ही कैन नॉट टेक द डिसीजंस, ही कैन नॉट टेक द आपका एनी आपका डिसीजन टू परफॉर्मिंग द टास्क. सो बोथ सिचुएशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर द आपका ऑर्गेनाइजेशन. हैंडी फ्यूल सेज डैट कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इक्वल. फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ ए पर्सन इज गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 units in 1 week, but he is not given authority to purchase the raw materials. Listen carefully, students, कि if a person is given responsibility to produce 100 units in 1 week, यदि मैनेजर या पर्सन जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब प्रोड्यूस कर रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को टू प्रोड्यूस द 100 units in a week, 1 week में 100 units प्रोड्यूस करना है, but he is not given authority. But सुपीरियर पर्सन ने अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी नहीं दी टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, कि रॉ मटेरियल परचेजिंग करने की उसको पावर नहीं है. देन इफ़ देयर इज़ नो आपका रॉ मटेरियल्स, देन द स्टोर रूम इज एज ए रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 units ऑन टाइम. इन दिस वे एट एनी कॉस्ट, यानी कि नो चांसेस that 100 units will be produced in आपका 1 week, because the subordinate have no authority to purchase the raw materials, and without raw materials no आपका production will be exist. The worker cannot be blamed for the not completing on time because he was given only the आपका responsibility and not the matching authority to carry on the work. जो मैनेजर है, जो सुपीरियर वर्कर्स है, द वर्कर्स कैन नॉट बी ब्लेम, यानी कि उस वर्कर्स को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर नॉट कंप्लीटिंग ऑन टाइम, बिकॉज सुपीरियर हैज़ नॉट गिवन द अथॉरिटी टू द आपका सबऑर्डिनेट्स. एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट इन नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क. यदि एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है विद लेस अथॉरिटी, कम अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मोर है, द रिजल्ट इज नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी कि इस कंडीशन में आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा. इट्स क्लियर. नाउ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट बेनिफिट कि नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हैं
अथॉरिटी में एंड में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो इन दिस केस अपनी अथॉरिटी का कोई भी पीपल मिसयूज़ नहीं करेगा. सेकंड, हेल्प्स इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. एंड इफ़ द बैलेंस इन बोथ यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल, देन इट हेल्प्स इन मीटिंग द आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, यानी कि बिना किसी देरी के अपने उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे. तो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट. नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, दैट इज डिमेरिट्स. फर्स्ट इज डिले इन वर्क ड्यू टू इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू द आपका लेस अथॉरिटी, यानी कि डिले इन वर्क होगा बिकॉज इफ एक्स इज ऑफ अथॉरिटी देन द आपका responsibility, then no work will be आपका completion on time. On the other hand, if responsibility is more than the आपका authority, in this situation also the work is not completion on time. Second is misuse of authority due to the आपका excess of authority. Yes, if any persons have the आपका a lot of authority, then there is a chances to misuse that आपका power, that आपका authority for their well, for themselves development. Third is overburden with the work with excess responsibility. Students, if you have assigned the आपका more responsibilities, then the worker will be आपका overburden, ठीक है, of the work. When he overburden of the work, then the work is not completed on time. Now third principle is discipline. Discipline refers to कि following code of conduct, rules, regulations of employment agreement, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनको फॉलो करना, डेट इज़ नोन एज डिसिप्लिन. गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे अपने सुपीरियर से गुड रिलेशन मेंटेन करना, डेट इज़ डिसिप्लिन. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स के बिटवीन क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट विच इज़ नोन एज डिसिप्लिन. मीटिंग कमिटमेंट्स टू ऑल लेवल्स, अपने ऑल लेवल्स पर जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना, उनको कंप्लीट करना. एंड जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज़ इफ़ एनी पर्सन्स ब्रेक डाउन द आपका डिसिप्लिन, ब्रेक डाउन द आपका रूल्स एंड रेगुलेशन, then judicious penalties will be put off on that employees. Students, Fuel insists that कि discipline is required at superior as well as subordinate levels. मीन्स कि डिसिप्लिन जो है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट लेवल्स पर रिक्वायर्ड होता है. द डिसिप्लिनरी रूल्स सेल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट्स बट डिसिप्लिन रूल्स यानी कि रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट एवरी लेवल, यानी कि जो डिसिप्लिन है ये एट एवरी लेवल्स पर रिक्वायरमेंट होता है. Clear and fair agreement between superior and subordinates, and judicious application of penalties. For example, the employees must honor their commitment toward the organization by working effectively and efficiently. Employees must honor their commitment toward the organizations by working efficiently and effectively. Means एफिशिएंटली और इफेक्टिव वर्क करके एम्प्लॉयज़ जो है गेट द आपका ऑनर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस. ऑन द अदर हैंड सुपीरियर मस्ट आल्सो मीट देयर कमिटमेंट्स बाय मीटिंग देयर प्रॉमिस ऑफ इंक्रीमेंट्स. अगर सुपीरियर ने कोई प्रॉमिस किया है या अपना कोई कमिटमेंट दिया है तो उसको फुलफ़िल कर सकता है रिगार्डिंग आपका इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस एंड वेज रिविजन्स एक्सेट्रा के लिए. Now, positive effect of this principle कि systematic working in आपका organization. If discipline is followed, then the every work should be systematic performed. Second is improves efficiency. Yes, if all the peoples are work in disciplinary,
then automatically the efficiency will be improves. Next is consequences of violation of these principles. First is disorder or confusion and chaos. If discipline is not followed, if discipline is ignored by the आपका pupils, then every activities should be आपका disorder. Wastage of resources in absence of discipline. Yes, if the discipline is not exist in the organization, then the resources are wastages at a lot of quantity, and delay in work due to the absence of rules and regulations. Yes, if no rules are followed by the employees, then delay in work is necessary. So these are the principles of handy fuel which are developed by the handy fuel. Next principles will be explained in next video. Okay students.